तुम लोग भी प्लान बना रहे हो नहाने का? कल क्लास है ना? कल लास्ट क्लास है। टाइमिंग तुम्हारे इसमें शेड्यूल में नहीं आएगी, शाम तक आ जाएगा। सुबह ही होगा, नहीं 8 से नहीं, थोड़ा सा लेट, मे बी 9 से होगा। क्यों? बात कर लेना तुम लोग एडमिशन में, बोल दो उनको 8 बजे ले। क्या हुआ था तुम? क्या? बाद में बताना क्लास की। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी पॉपुलेशन टुडे, ठीक है? इसमें जो टर्म्स में लिखवाऊंगी दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग दैट एंड नॉट कंफ्यूजिंग बिटवीन इट, ठीक है? सो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इट। अच्छा, इमेजिन करो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, दे आर वेरी लेस, ठीक है, बट पॉपुलेशन लोग बहुत ज्यादा है, तो विल इट बी डिफिकल्ट टू मैनेज इट, है ना? तो अगर ज्यादा पॉपुलेशन होती है देन इट्स अ प्रॉब्लम, अगर कम होती है देन आल्सो इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? बेसिस क्या होता है माइग्रेशन की, अगर एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है? दूसरा कि वहाँ पे जहाँ से जा रहे हैं लोग वहाँ पे कम है, ठीक है? तो राइट डाउन डेफिनेशन। Population can be an asset. Why study population? बाकी का पीसीएस का खत्म हो गया है सिलेबस। अच्छा, एथिक्स रहता है अभी? मेरे में नहीं। Okay, why do we study population? Why do we need to know कि इतने लोग हैं हमारे पास? So that we can manage resources efficiently, है ना? So write down. Population can also be an asset. Can also be an asset. India has a large number of young, educated and skilled people. India has a large number of young, educated and skilled people. Number of young, educated and skilled people. So now what is demography? Write down demography means study of people. Demography. In the words में it is divided. It means the study of people.
So on these two words it is divided. Demos mean people and breaking things were described. Then we have two types of demographics. Two types of demography. First is forward. Last one. Next formal demography. Two main types of demography. First is formal demography. In front of this, write down uses numbers and statistics. Uses numbers and statistics. Write another line. Write birth rates. This is formal demography. We're going to write down numbers and statistics. So these things like birth rate, death rates, death rates, migration, and how population size changes. How population size changes. Basically, formal demography where future predictions बताते हैं how population trend is going to arise or decline. Then we have social demography. Looks at the social and economic reasons. Looks at the social and economic reasons behind population changes. Reasons behind population changes. Basically, trying to understand key population effect theory. This is basis पे कितना. Right, next time, this type of demography connects. This type of demography connects. Population changes. Population changes with education. Population changes with education. Jobs, education, jobs, health, culture, and politics. Akansha, what was the last line you have written? What word did you miss? नोट्स इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे.
ओके, इसमें डेफिनेशंस ही हैं that you have to mug up, ठीक है, and make sure that you are not getting confused between these. Next, एक सेकंड में सोशल डेमोग्राफी रिपीट कर देते हैं. It looks at the social and economic reasons behind population changes. This is a definition of social demography. Looks at the social and economic reasons behind population changes. Next, this type of demography connects population changes with education, jobs, healthcare, culture, and politics. The next headline, how do we study population trends? First is census. क्या होता है census? कितने सालों में होता है? 10 साल. फिर उसके बाद क्यों नहीं हुआ? कोविड सर. 11 के बाद 21 में इट वाज सेटअप, बट देन कोविड केम और फिर इसके बाद से नहीं हुआ. देन पॉलिटिक्स, बट उसके बाद कोविड. नहीं कर रहे हैं काम. काउंट करके क्या होगा? So basically we count population so that we can understand the resources we have is efficient or not. Migration हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है? कोई अगर किसी का घर है वहां से माइग्रेट क्यों हो रहा है? So this makes us understand कि किसी सिटी की डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है, कितनी कम है. जहां पर रिसोर्सेज है फिर उस क्षेत्र पे ध्यान दिया जाता है कि यहाँ से माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है. So these are the reasons we do population analysis. Census. Census means counting every person in a country. Census means counting every person in a country. क्या पता लगा फिर? क्या हुआ तो है ना. Census happens every 10 years. What is surveys? सर्वे का और सेंसस में डिफरेंस क्या है? पर ईयर. क्या लिमिटेड? So basically we take information from a sample. ठीक है, उस छोटे से जगह से we try to understand overall presentation या फिर overall population. ठीक है. Write down surveys collects information from a smaller group of people. Smaller group of people instead of whole population. Next liner, instead of whole population. Next liner, this is done by National Sample Survey Office. National Sample Survey Office. In bracket write down NSSO. Under the Ministry of Statistics. Sorry. National Sample Survey Office, NSSO. Under the Ministry of Statistics. Ministry of Statistics and Program Implementation.
statistics and program implementation. In bracket, write down MOSPI. Write down next heading, distribution and density of population. Distribution and density of population. Write first pointer to it. Population distribution means how people are spread. Achha, I have a question for you guys. So imagine there is like these two tracks. Yeah, and there are like 100 people over here. And here we have one person. Okay. Now you have to save only like one of them. So tell me if you will save, like train is coming from there, and are you going to like save 100 people or one person? And to be very clear, this one person, okay, tell me first of this, then I'll give you the dilemma. 100. And who is saying one? एक आदमी है, दूसरी जगह 100 इंसान है, किसे बचाओगे? एथिक्स हुआ तुम लोगों का? तुम्हारा नहीं हुआ, किस किस का हुआ है? They are tied on the track. ठीक है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, and train is coming over there. This is called utilitarianism method. ठीक है, utility के हिसाब से we try to take decisions. So tell me which decision will you take? So एक, क्यों एक? नहीं, सिंपल दोनों का है, सेम एफर्ट्स लगेंगे. सर है, मैन पावर बहुत सारी है, टेंशन मत. सो की तरफ क्या? जो मैंने सिचुएशन दी है वही है, बस फुल स्टॉप. नेक्स्ट. So ठीक है. And what if this person is earning for another 100 people? Dependent है 100 आदमी इसके ऊपर. ये तो बड़ी जल्दी बता दिया. आप डिसाइड करो ना. नहीं, ऐसा हुआ कि अगर ये आदमी मर गया, ठीक है, तो वो 100 आदमी आत्महत्या कर लेंगे, फिर यहाँ पे 101 हो गए, तो अब किसे बचाओगे? किसे? 101 को बचाओगे? किसे बचाओगे? एक को? 100 को क्यों बचाओगे? नेक्स्ट. कुछ भी हो सकता है. What if they committed suicide? ठीक है, तो वो 101 है, ये 100 है, तो किसे बचाओगे? टेक डिसीजन. मुझे वो वाला आंसर नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए. Okay. Who else? Me? Okay. ठीक है. यूटिलिटेरियनिज्म बोलता है कि जहां पर ज्यादा क्वांटिटी हो, वी शुड गो टुवर्ड्स दैट प्लेस. ठीक है, दिस इज गिवन बाय अ पर्सन, अ फिलोसोफर नेम्ड मिल. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक को बचाते हैं, ठीक है, तो ये चांसेस हो सकते हैं, तुम अगर एक को बोल रहे थे, जिसने बोला है कि मैं 100 को बचाऊंगा, तुम ये भी बोल सकते थे कि मैम अभी वो सिचुएशन अराइज नहीं हुई है कि वो सुसाइड करेंगे. ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, विल लुक इनटू इट. ये एथिक्स है. ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन. अभी जो सिचुएशन है, वी शुड टैकल दैट फर्स्ट, उसके बाद में.
अनदर थिंग इज मिल अगर यहाँ पे होता, अगर फिलोसफर होता तो ही वुड हैव सेव्ड दिस 100 पीपल, क्योंकि वो क्वांटिटी में बिलीव करता। अंडरस्टूड? तो तुम ये भी तो कर सकते थे कि मैम अभी हम जो सिचुएशन है उसको टैकल करेंगे, 100 आदमी को हम बाद में देख लेंगे। तुमने बोला कि मैम वो तो ऐसे थोड़ी ना कर सकते, ऐसे थोड़ी ना कर सकते। मैम हम वो सिचुएशन टैकल कर सकते हैं बाद में, दैट्स अ चॉइस ऑफ लेटर, हम बाद में कर लेंगे वो चीज। हाँ, एंड दिस इज हाउ वी टेक डिसीजन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट की भी जब बात आती है। अंडरस्टूड? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, मैं तो बता रही हूँ दोनों सिचुएशन का। अगर मेरा होता तो ये बोलता, और अगर तुम लोग बोल रहे हो एक, तो तुम ये बोल सकते थे कि मैम बाद में हम उस लोगों को टैकल कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू लर्न इन एथिक्स आल्सो। हो गया अभी? डिस्कशन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, चलो। डिस्ट्रीब्यूशन एंड है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड, मैं भी ऐसे क्वांटिटी पे बिलीव करती हूँ। मैं ये भी तो नहीं पता ना कि क्या पता उस 100 पे भी और 100 डिपेंडेंट हो। ये सब बोलना चाहिए, ये तो सोचना चाहिए, ये सोचना है खुद से। नहीं, अगर फिर हम ये बोलते कि तो फिर आप सिचुएशन मैं दूंगी, तुम नहीं दोगे। तुम्हें बोलना था ना कि मैम ऐसा भी हो सकता है क्या। तुम जब भी एथिक्स का पेपर करोगे, ठीक है, तो मेक श्योर जो भी सिनेरियोज या फिर जो भी डायलेमास यू आर फेसिंग और तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, मेक पॉइंटर्स ऑफ इट एंड राइट इट समवेयर, ठीक है, क्योंकि और उसके हिसाब से, एंड आल्सो देयर इज अ चॉइस दैट यू शुड आल्सो हैव। पॉलिटिक्स में भी होती है, एथिक्स में होती है, और डेली लाइफ में भी होती है। डूइंग नथिंग आल्सो, डूइंग नथिंग इज आल्सो अ चॉइस एंड नो वन स्पोक दैट। मैं तो कुछ नहीं करूंगी। क्यों, वो जो आपने बोला वो इलेक्ट नहीं हो सकते दोबारा? हो जाएंगे सर दोबारा इलेक्ट। पता है एथिक्स में देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। डायलेमास आर ऑलवेज बिटवीन गुड एंड मोर गुड, एंड इट इज बिटवीन बैड एंड मोर बैड, ठीक है। देयर इज नथिंग गुड एंड बैड इन एथिक्स। Write down what was the last word I wrote. Are spread out over Earth's surface. Spread out over Earth's surface. In India, 2011 census. In India, 2011 census. Population 1.21 billion. 1.21 billion. That is 17% of the world's population. 17% of the world's population. Next line, India land is 2.4%. India's land is 2.4% of the world's total area. Of the world's total area. एथिक्स पहले किसने पढ़ाया तुम लोगों को? नहीं नहीं, पहले तो कराया है ना किसी बैच में, किसी ने तो किया है। नहीं, Indian society basically about social issues. Ethics is more about you, about moral values. Okay, how you present yourself, what are the dilemmas you are going to face when you will be in the power.
India's land area is 22.4%. India's land area is 2.4% of the world's total area. Okay. Next, world distribution of population. World distribution of population. In 2015 was 7.3 billion. 2015 was 7.3 billion. Next heading, factors affecting population distribution. Factors affecting population distribution. Factors affecting population distribution. So as we know that there are some places which are overcrowded, okay? There are some places which are empty. क्या reasons हैं? क्या resources? Development basically ज़्यादा है. What else? अच्छा, ठीक है. Right, first geographical factor. Geographical factor. In this first pointer, water availability. Water availability. Next, landforms. So basically, these are good for farming. ठीक है, flat forms जो होते हैं. Then climate. जो gentle slopes होते हैं, which are good for farming. ठीक है, अगर ऊबड़ खाबड़ होगा तो we won't be able to do farming over there. ठीक है. Climate. Then soil. Fertile soil is important. Then economic factor. Economic factors. In this write down, first is minerals. जहाँ पे ज्यादा मिनरल्स होंगे वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेगा और इंडस्ट्रीज आएंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगी, डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी. अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंटर. मिनरल्स के बाद अर्बनाइजेशन. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन. Then we have social and cultural factors. Social and cultural factors. जैसे वाराणसी वगैरह जगह हो गई, वो कल्चर को अट्रैक्ट करता है. पीपल लाइक टू लिव देयर क्योंकि रिलीजियस बिलीफ वहां पे ज्यादा होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. दिस वाज अ हेडिंग. Migration and population growth. At the national level, first pointer of this, at the national level, migration doesn't change total population much. Migration doesn't change total population much. But at local or regional levels, migration, but at local or regional levels, migration can have a big impact. Migration can have a big impact. So basically, if there are people who are moving out of the country, ठीक है, तो हमारे resources efficient ही होंगे, ठीक है, utilize ही होंगे. But there is like region से region या फिर state से state migration होता है जो, तो वो resources पे impact करता है. ठीक है.
नहीं, उससे ओवर क्राउडेड हो जाती है एक जगह, दूसरी पे कम हो जाता है। नेशनल लेवल, हाँ, मतलब इफेक्ट नहीं करता है रिसोर्सेज पे मच। हाँ, तो फिर वो बाहर वाले कर तो रहे हैं प्रोटेस्ट। नहीं नहीं, पूछो ना। तो दोबारा शिफ्ट होते रहेंगे। Then we study population in two factors. Study population in two factors. Fertility and mortality. Fertility is birth rate and mortality is death rate. Fertility and mortality, we study population in two factors. Fertility and mortality. Right definition of fertility? Means the actual number of children, actual number of children, actual number of children born to a woman, actual number of children born to a woman or a group of women, or a group of women. So this is like the main reason of population growth. Okay. Then measurement of fertility. Measurement of fertility. Write first sub pointers to this. Crude birth rate, CBR. Crude birth rate, CBR. Simplest measure of fertility. Live births per 1,000 people. Live births of fertility. Live births per 1,000 people in a year. Live births per 1,000 people in a year. General fertility rate. Next pointer to this. General fertility rate, that is GFR. Counts live birth per 1,000. Counts live births per 1,000 women aged 15 to 49 years. Per 1,000 women aged 15 to 49 years. So this is a childbearing age. Okay. 15 to 49 years. तो बेसिकली क्रूड बर्थ रेट में दे इंक्लूड लाइक एवरीवन, ठीक है, बच्चियों को भी इंक्लूड करते हैं, दे इंक्लूड विमेन आल्सो फ्रॉम लाइक ऑल द एज फैक्टर्स। तो इसीलिए क्रूड जो है दैट इज नॉट इम्पैक्टफुल, बट दिस इज जनरल फर्टिलिटी रेट इज इम्पैक्टफुल क्योंकि ये एक सर्टेन एज को टारगेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ASFR, ASFR। counts birth per 1,000 women, birth per 1,000 women in a specific age group. Then total fertility rate, the average number of children, the average number of children a woman would have, a woman would have in her lifetime, in her lifetime, if she followed the, if she followed the current fertility pattern of her country, if she followed the current pattern of her country.
if she followed the current pattern of her country? The average number of children a woman would have in her lifetime if she followed the current fertility pattern of her country. Current fertility pattern of her country. Next, reason for high fertility in India. First is religious belief. So some religious encourages large families. ठीक है? The first is religious belief. Reasons for high fertility. First pointer is religious belief. Then marriage is universal. Marriage is universal. Early marriage. Preference for sons. Preference for sons. Then children seen as assets. Children seen as assets. Assets basically क्या है? और ये भी कि देखभाल करेगा बुढ़ापे में. क्या होती है? Then traditional practices that affect fertility. Traditional practices that affect fertility. बता रही हूँ. Traditional practices that affect fertility. First is religious ideologies. So basically there are different religious ideologies, different religious कि basically which are like implemented on motherhood. कि breastfeeding इसी moment पे होनी चाहिए या फिर ऐसे ही होनी चाहिए. So these are the factors जो fertility कम करती है और जो आगे देके women को problem करती है. ठीक है. Next, early marriage and early childbearing. Early marriage and early childbearing. Then lack of right of self-determination. Lack of right of self-determination with reference to reproduction. Lack of right of self-determination with reference to reproduction. Then another, society pressure. Self-determination with reference to reproduction that affect fertility. Affect. रिलीजियस बिलीफ क्या है कि तुम्हें बच्चे करने ही है पैदा. ठीक है. फिर उसके बाद मैरिज इज यूनिवर्सल. इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. कोई भी एक कल्चर ऐसा नहीं है जब अगर हर जगह ही एक्सेप्टेंस है मैरिज की तो इट विल लीड टुवर्ड्स व्हाट कि बच्चे भी होने ही है. तो फिर पॉपुलेशन हो गई ना उससे इंक्रीज. मैरिज इज एक्सेप्टेड बाय एवरी कल्चर, एवरी रिलीजन. तो होना ही है तो वही तो इसीलिए तो लिखा है. हाई फर्टिलिटी हो रही है क्योंकि एक भी जगह ऐसा है ही नहीं जहाँ पे मैरिज को एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है. वो एक्चुअली हर पॉइंट इज दैट इट इज सो कॉमन व्हाई वी आर राइटिंग इन दिस हियर. ये पॉइंट है इसका. इस तभी तो वो ऐसे कर रही है. तो क्या क्यों लिख रहे हैं हम.
Okay, next, effects of high fertility. Effects of high fertility. So it affects family, women and society in many ways. ठीक है, तो first pointer, impact on women. Impact on women. क्यों impact करेगा women पे? हेल्थ पे, ठीक है. और फिर उसके बाद हर लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, पूरा केयरिंग में और उसमें निकल जाती है. खुद लिखना. इम्पैक्ट ऑन फैमिली, अनदर पॉइंटर. तो द ब्रेड विनर ऑफ आवर सोसाइटी कौन है? हाँ, तो बेसिकली वो सोसाइटी में प्रेशर फील करता है, ठीक है, कि अब फाइनली अर्न करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. देन इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स, व्हाई दे सफर द मोस्ट. इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स क्या क्या होता है? ठीक है, एक ये भी होता है ना कि अगर सिबलिंग है घर में तो नाउ शी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज सिबलिंग. हाँ, सेकंड मदर बन गई, क्योंकि हम उस चीज को आई सेड इन द लास्ट क्लास, हम इस चीज के लिए बोलते हैं कि मदर को तो जो बच्ची होती है उन्हें स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है. सो नेक्स्ट, मोर्टेलिटी हेडिंग. इट मीन्स डेथ रेट. डेथ रेट. ways to measure mortality heading. Ways to measure mortality heading. First, again, crude death rate. Death rate. Second, life expectancy. Life expectancy. In front of it, write down. Shows how many years a newborn. Shows how many years a newborn baby is expected. Newborn baby is expected to live on average. तो ये क्यों देखा जाता है? टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ का कितना हेल्थ केयर सफिशिएंट है. नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. 76. सो बेसिकली हम ये इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ का हेल्थ केयर कैसा है. इज इट पुअर और इज इट गुड? ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा है, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है. देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आई थिंक इट्स 76. इंडिया नहीं, इट्स 70. जापान का 84. कब? और कोविड के बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. Infant mortality rate. Measure the number of babies. Measure the number of babies who die before reaching, of babies who die before reaching 1 year of age, who die before reaching 1 year of age per 1,000 live births. Per 1,000 live births. Next heading, migration. अलग हेडिंग सर, मोर्टेलिटी के बाद नेक्स्ट हेडिंग माइग्रेशन. Next, write down migration means the movement of people from one place to another.
Next, first is place of origin. First, place of origin. Place of origin. Second is place of destination. Place of destination. So place of origin is the place that we are living. ठीक है, जहां से हम छोड़ रहे हैं. Destination is where we are reaching. ठीक है. So write down. When people move, the population of the origin decreases. The population of the origin decreases. Second pointer, the population of the destination increases. Next heading, why people migrate. Point number 1, why people migrate. First pointer, permanent. Second, temporary. Third, seasonal. कौन explain करेगा? वाह. हाँ. सीजनल होते हैं लेबर सीजनल सीजन के टाइम सीजनल जैसे हमारे माइनिंग होती है अभी जनवरी से जून तक, तो फिर जो बिहार से लेबर आते हैं. हाँ, पता है ना कहाँ जाना है फिर. ओके, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. फर्स्ट, रूरल टू रूरल. हाँ हाँ सही है, चारों लिख लो, फिर उसके बाद मतलब समझाओगे. हाँ परफेक्ट, लिखो चारों ऐसे. अर्बन से रूरल क्यों जाते हैं लोग? इट्स अर्बन से रूरल क्यों जाएगा? जाते हैं लोग. एक सेकंड, ये क्या होता है? नहीं जाते हैं लोग. नहीं, पीपल आल्सो शिफ्ट परमानेंटली आल्सो समटाइम, बिजनेस के लिए, मेंटल पीस के लिए, लाइक दैट डिफरेंट रीजन. क्यों नहीं जाएंगे बिजनेस के लिए? तुम दिल्ली में कहाँ बिजनेस खड़ा करोगे अगर कुछ इंडस्ट्री खोलनी है तो? यहाँ पे है जगह अभी खोलने की, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी गांव में. अब उसे भी तो अर्बन बनाना है. नेक्स्ट, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. कहाँ नहीं खोल सकते? खोल लो सर, और खोलो ना, जगह है यहाँ पे अब खोलने के लिए. मैम, जब रूरल की तरफ हम इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज वी वांट मोर डेवलपमेंट. ठीक है. हाँ, उत्तराखंड में हो रहा है ना ये चीज. हाँ, तो दिस इज एन एग्जांपल. इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. बहुत कम टाइम है हमारे पास. When people come, ये दिक्कत है. क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है. Immigration, when people come into a new area. Emigration, emigration क्या होता है? When people leave their area to go elsewhere. Example, India to next, push and pull factors. So push factor is that why people leave a place. ठीक है. Push factor
explains why people leave a place. तो रीजंस लिखवाऊं या लिख लोगे? ठीक है, जॉब्स नहीं है, ठीक है, जा रहे हैं लोग, डेवलपमेंट नहीं है, मन नहीं लग रहा है, देयर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस. डिजास्टर आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, ठीक है, फॉर दैट रीजन वी आल्सो लीव. देन पुल फैक्टर, why people come to a new place, good education, healthcare, development, climate. Then type based on area, type based on area, next heading. Type based on area. Number 1, internal migration. So internal migration, it is when it is within a country, okay? If someone is moving from Bihar to Delhi, okay, so this is internal migration. Then international migration, when people is moving from one country to another country. Internal migration or international migration? Next, 4 phases of population. 4 phases of population growth in India. 4 phases of population growth in India. Phase 1. Phase 1, 1901 to 1921. This is called stationary phase. 1921. This is called stationary phase. In front of it, write down growth rate was very less. Growth rate was very less. Even negative. Another line, birth rate and death rate were very high. Birth rate and death rate were very high. So this shows what? Birth rate भी high है और death rate भी. तो भूमिका ऐसा हो रहा था ना कि पैदा तो कर रहे थे वो, ठीक है, पर मर रहे थे, तो इससे बता रहे हैं कि हेल्थ केयर बिल्कुल अच्छा नहीं था. अपने एफर्ट्स हो गए, बट फिर उसके बाद एनवायरनमेंट भी तो अच्छा चाहिए ना. Phase 2, 1921 to 1951. This is steady growth phase. Steady growth phase. Right pointer to it. Death rate fell due to better health. Death rate fell due to better health, sanitation, transport and communication. Death rate fell due to better health, sanitation, transport and communication. Birth rate remained high. Birth rate remained high. Then phase 3, 1951 to 1981. 1951 to 1981. This is population explosion phase. Population explosion phase. Rapid growth, in front of it write down rapid growth due to sharp fall in. Rapid growth due to a sharp fall in death rate. Due to sharp fall in death rate, but high fertility continued. Right, next pointer, average annual growth 2.2%. Continued.
Average annual growth 2.2%. High fertility की वजह से. Average annual growth 2.2%. Today is Friday. So on Monday, I want answer on this topic. ठीक है, population का in your own words, explaining all the factors. ठीक है, सब कुछ population का जितना भी लिखवा रही हूँ आज in your own words. क्यों नहीं आऊंगी मैं? हाँ, नहीं 8 बजे क्लास तो साढ़े खत्म है, but I want to see the answer. ठीक है? नहीं, मंडे को I'll come at 9. कुछ भी नहीं, नहीं यही जो मैं लिखवा रही हूँ in your own words, explaining everything. ठीक है. Phase 4, 1981. 1981. Slowing down phase. Slowing down phase. Slowing down phase. Growth still high. But gradually slowing. Reasons: late marriages. Late marriages. Education, especially among women. Better quality of life. Education, especially among women. Better quality of life. Especially among women. Then theory of, next heading, theory of demographic transition. Theory of demographic transition. It was introduced by Frank. Right heading, the 4 stages. Frank. पूरा लिखा नहीं है मैंने इसमें, नोट्स में ऐड कर दूँ. The 4 stages. PDF क्या? नहीं, इसके सीधा नोट्स सुनिए. First stage, pre-transition. Pre-transition, high birth rate and high death rate. Pre-transition. High birth rate and high death rate. Then stage 2, early transition. Early transition. In front of it, write down. Death rates start falling. Death rate starts falling due to better health. Due to better health, food and sanitation. Late transition, stage 3. Late transition. Birth rate starts declining. Birth rate starts declining due to urbanization. Birth rate starts declining due to urbanization. Family planning. Better education. And more working women. And more working women. Then stage 4, post-transition. Post-transition. Population growth became stable or even negative.
Then write down India is in stage 3. Seen population growth become stable or even negative. Then India is in stage 3. Then write next heading population composition. Population composition. So basically this tells what kind of people make a population. Write first age composition. What kind of people make up the population? Okay. Like on basis of sex, age, caste, religion. Not caste, religion. Okay. Age composition, it means how the total population, it means how the total population is divided into different age groups. Is divided into different age groups. So first age group is children below 15 years. Population is divided into different age groups. Children below 15 years. Working age 15 to 59 years. Next, working age 15 to 59 years. Then third, aged 60 years and above. Aged 60 years and above. 60 years and above. Then dependency ratio. So basically this is that who are dependent, okay, economically dependent. So first is high dependency ratio. Less dependency ratio. Another. This is called demographic dividend. Demographic dividend. Less dependency ratio. Demographic dividend in bracket write down more workers, fewer dependent. More workers, fewer dependent. Then next write down sex composition. Next heading. In bracket write down more workers, fewer dependents. Next, sex composition. Sex composition shows how many males and females are there in a population. Shows how many males and females are there in population. Next heading, transgender composition. Transgender composition. So it came first time in 2011, ठीक है, उस वाले census में. So population recorded under, first pointer, population recorded under other was 4,87,000. Under other category, basically. 4,87,000. But this number is not exact. But this number is not exact because many transgender people still chose male or female. Because many transgender people still chose male or female.
Then Divyang, that is disabled composition. Divyang, disabled composition. According to census 2011, 2.68 crores people were disabled. 2.68 crore people were disabled. Literacy composition. Literacy composition. In front of it, write down. It gives people power and awareness. In front of it, write down. After independence, like first pointer, after independence, literacy improved a lot. Now around 2/3 of Indians are literate. Now around 2/3 of Indians are literate. Now around 2/3 of Indians are literate. So with this we have completed. ठीक है, इसकी PDF मैं आज या कल में ही डाल दूंगी, because there are a lot of things that I have not dictated that you have to learn. आ जाओ, बाहर आ जाओ, कल देखो.